Friends, we were discussing about the facts about India's nuclear doctrine, and in which we see that India has a partner of France, in which it has 6 pressurized European reactors of 1650 megawatt of each, and it has 9900 megawatt Jaitapur nuclear power project with the partnership of France. And we are also having a techno commercial offer to NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited with 6 reactors. तो 6 रिएक्टर NPCIL के पार्टनरशिप में हम फ्रांस के साथ हम डेवलप कर रहे हैं. Then for Russia we are cooperating since 1960s. So India has been one of the oldest nuclear partner of Russia, and in which we are having scientific technical cooperation and key supplier of nuclear fuel to India. Russia is also engaged in 2008 agreement on construction of nuclear power plant at Kudankulam, Tamil Nadu. Kudankulam वाला power plant रशिया के हेल्प से इंडिया ने बनाया. Then we are having tripartite agreement with Russia, Bangladesh and India to work for रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो इसे हम याद रखेंगे. बांग्लादेश में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए इंडिया, रशिया और बांग्लादेश साथ काम कर रहे हैं. यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रीमेंट helps again India and USA with the development of India's nuclear program, and NS के लिए भी इंडिया और से साथ काम कर रहे हैं. Then India has been granted a clean waiver to India in 2008. तो NSG के द्वारा भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उसकी लेख जोख 2008 में हमें मिल गई. Then we have trade with the rest of the world, which is provided under NPT to allow the engagement. Then we have IAEA, that is International Atomic Energy Authority, which provides the safeguard for nuclear weapons with agreement of India and USA. Then India and Japan also collaborate for peaceful use of nuclear energy as well as use in the medicinal purposes. And in case of India, we have an automatically suspended cooperation in terms of monopoly of reactors by India as well as Japan. So remember such agreements, which is useful in your prelims as well as mains point of view. Very important. Then what are the challenges of India's civil nuclear engagement, which goes for global challenges? First, provide for nuclear engagement with the other countries which are non-signatory to the Nuclear Proliferation Treaty. Second, provide for the key barriers to India's acceptance within the global non-proliferation of regime, which has India's nuclear weapon program and its strained relationship with neighbor Pakistan. So पाकिस्तान के साथ जो भी रिलेशन है वो अच्छे नहीं होने के कारण इंडिया को लगातार परमाणु संयंत्र में इनोवेशन और डेवलपमेंट करना पड़ रहा है मित्रों. Then China has been again a very hostile nation in the border of India, in which China shows its hostility in Arunachal border, then in Siachen border, in Jammu and Kashmir area, Ladakh area. We saw intrusion by Chinese army, and it again NSG, it is a part of NSG which India is non-signatory, but China is having the NSG signatory. तो चाइना NSG का मेंबर होने के चलते इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है. Then domestic challenges in India, concern for the nuclear safety to protest in the domestic front. इंडिया में भी बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर हेड्स की डेवलपमेंट के चलते गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन बहुत सारे प्रोटेस्ट और अपराइजिंग्स देखने को मिलते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट इज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. 2 जून के मंथ में SCO न्यूज़ में था. वाई दैट SCO हैज़ द दुशान ताजिकिस्तान with 16th meeting of SCO Secretariat in Tajikistan.
तो ये दुशानबे ताजिकिस्तान में 16वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ऑफ SCO. So SCO was developed in order to counter the WTO regime in terms of trade and various deals of United States and Western power. तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने डेवलप किया by meeting of 5 nations with China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. It is again a regional forum in which the regional members adopt and work for the development of various perspectives. So it works against terrorism, ethnic separatism, religious extremism and other such challenges of the region. India is also taken as to be part of SCO, which is the fourth of SCO members such as India, Russia, China and Pakistan are nuclear power and 2 states are members of UN Security Council. सो UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया को इन नेशंस का सपोर्ट चाहिए होगा, तो इसके लिए इंडिया अगेन मेक्स ह्यूज लीफ इन टर्म्स ऑफ रीजनल पावर. सो रीजनल लेवल पे इंडिया की क्रेडिबिलिटी और प्रेजेंस बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ नैम, इन टर्म्स ऑफ सार्क, इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स नेशन. सो दैट इज वाई बिम्स्टेक इज ऑल्सो देयर. सो दैट इज वाई इंडिया इज अगेन पुशिंग SCO फॉर इट्स वेरियस पर्पजेज. नाउ SCO का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, हम देखते हैं थोड़ा सा. सो SCO हैज हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. सो सभी नेशंस, जो 5 नेशंस हैं उनके हेड्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दोज नेशंस टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. देन द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंड प्रायोरिटी डायरेक्शन. Then 2 permanent bodies are there in SCO, and we have SCO Business Council which takes the decision of trade, commerce and other businesses of 5 SCO nations and economic cooperation. Then SCO Interbank Consortium for expansion of banking services. तो banking services के लिए भी SCO में banking consortium है. Further, Secretariat of SCO coordinates and provides informational, analytical, organization and technical support. It also provides regional anti-terrorist structure. Regional anti-terrorist structure भी provide कर रहा है SCO. आतंकवाद के विरोध में खड़ा होने के लिए RATS. And it also makes for separatism and extremism. तो अलगाववाद और पृथकतावाद को भी काउंटर करने के लिए SCO वर्क करता है. रिमेंबर दिस चार्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज मेंस. नाउ लुकिंग इनटू द इकोनॉमी 4 years ऑफ GST के बारे में न्यूज़ है मित्रों. दैट इज रिसेंटली इंडिया मार्क द 4th एनिवर्सरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंडिया में हमने 4th एनिवर्सरी मनाई ऑफ GST. सो इंडिया has started GST in 2017, 18, 19, 20, 4 साल हो गए. Now GST is acting as a tool for indirect tax law and regime to supply of goods and services, comprehensive multi-stage destination based tax, and it also provides duty, VAT, services tax, luxury tax are subsumed. So we have 5, 12, 18 and 28% taxation on different products and precious and semi-precious and rough stones. We also have minor portion of all goods and services which does not invite any kind of taxation. Then where several goods like property tax, stamp duty and electricity duty, excise duty, alcohol, basic custom duty and petroleum, crude, diesel, petrol, aviation, turbine fuel and natural gas etc. are not included under GST. These are not included in GST. These are exceptions. So exceptions are asked by UPSC and other competitive examinations. इसे हम याद रखेंगे. ये exceptions हैं जो कि GST में नहीं लगाए गए हैं इन पे कोई भी कर.
नाउ टैक्सेस अंडर द जीएसटी, क्या क्या टैक्स है मित्रों? परचेज टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन सेलेबल गुड्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो भी आप गैम्बलिंग और बेटिंग करते हैं। दैन इंटरटेनमेंट टैक्स है, मनोरंजन कर, एंड स्टेट वैट टैक्स, सेल्स ऑफ गुड्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, surcharge of cesses, entry tax, all forum luxury tax is there. Then central excise tax from center, then service tax, surcharges of cess, then additional duties on customs, तो custom duty भी GST में है. Then there is excise duty and additional duty on excise are on medicinal, टॉयलेटरीज एंड प्रिपरेशन एक्ट, उसके द्वारा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा रही है. देन देयर इज सीबीटी, दैट इज कस्टम काउंटरवेलिटी ड्यूटीज, एंड एसएडी टैक्सेस अंडर द जीएसटी सेंट्रल टैक्सेस. तो ये सारे सेंट्रल टैक्स हैं लेवाइड बाय यूनियन अंडर आर्टिकल 269 एंड 270. देन वी हैव स्टेट टैक्सेस. ये सारे क्या हैं? स्टेट टैक्सेस हैं. दैट ऑल कंप्राइजेज ऑफ जीएसटी. सेंट्रल टैक्सेस आर कॉल्ड एज सीजीएसटी एंड स्टेट टैक्सेस को कहा जाता है एसजीएसटी. देन वी आल्सो हैव इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, which include central states as well as the union territories. Then the part of cascading effect elimination is done by the application of GST. GST को अप्लाई करने के लिए कैस्केडिंग इफेक्ट को ये रिड्यूस करता है. दैट मीन्स वी वेयर अर्लियर हैविंग पाइलिंग ऑफ टैक्सेस, एक के ऊपर दूसरा तीसरा कर एक ही चीज़ों पे. दैट वॉज कॉल्ड एज कैस्केडेड टैक्स. तो जीएसटी ने क्या किया? एक टैक्स स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी ला दी, in which there is a single basis of taxes, reducing all the multiple level of taxes. We are having a single integrated tax for various commodities at central level, and the goods which enters to the other state through transportation, then at the consumer level. So from the manufacturer level to the level of the consumer, from the level of the transportation, there is single tax regime that holistically unifies other taxes also. So it comprises less number of companies, reduction in the compliances, it reduces the cost of logistics and hence enhances the logistics efficiency through e-way bill और फास्ट ट्रैक के द्वारा जो जीएसटी है वो काम कर रही है, और दैट इज इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन EEZ टू लोकल मार्केट. एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. वैसे सेक्टर्स मित्रों जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसमें कि छोटे छोटे उत्पाद सकल स्मॉल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सो उनको भी ये कैटर करती है. इट क्रिएट्स पैरिटी इन सर्विसेज. जीएसटी क्या कर रही है? पैरिटी इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग के पास टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगता है और सर्विस जाने के बाद जीएसटी लगता है. तो इट क्या कर रहा है? ये रेगुलरिटी ला रहा है और पैरिटी क्रिएट कर रहा है. Again, it's very important. Again, GST makes easier to collect and reduce tax evasion. तो कर की जो चोरी हो रही थी उसको भी ये रिड्यूस कर दे रहा है. Now companies are having ease of doing business and having unified structure to pay the taxes at various level through online module. So e-way bill in online module. Further, it moves the economy to the proportion to create common market. और जीएसटी क्या कर रहा है? कॉमन मार्केट बना रहा है मित्रों पूरे देश में. इन
unifying India in a single tax regime. Further, it makes the broadening of tax base. So कुछ टैक्सेस जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि कितना प्रतिशत कर लगाया जाए, मल्टीपल टैक्सेस हो रहे थे इन टोबैको, अल्कोहल, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी गुड्स, तो वैसे भी चीज़ों को यूनिफाई कर दिया एंड दैट लीड्स टू ब्रॉड टैक्स बेस terms of 28% taxation. Remember this again for your prelims as well as mains point of view. So what are the challenges that are catered under the GST regime is under the initial year the manufacturers as well as service provider were failing to cater the needs of the compliance as well as the market structure at various level of GST. तो उनके लिए that was not fulfilled under the first GST regime. Second, complex tax slab. पहले जो कर होते थे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते थे और विभिन्न पोर्शनों में विभिन्न जगहों पे अलग अलग टैक्स लगते थे, उनको इसने सिंपल किया. Although it is said to be confusion in the compliance structure, and it also reduces the unethical profiteering practices. Further, the cumbersome filing structure of the tax was also reduced. So the portion of valid tax invoices and debit notes, जो भी valid taxes हैं on debitors हैं, उनको ये इसमें शामिल कर रहा है. But there are certain challenges which government makes the provision for new GST regime. Now we look into the solution for better GST regime. So better GST के लिए हमने क्या किया? Structure limiting commodities, 3 tax slab is needed for the hour and experts have recommended 3 slabs structure. So GST में 3 slab structure की मांग हो रही है मित्रों. Let us see how it works and which helps to rationalize the indirect tax regime. Now optimizing digital resources. Further, the digital tax resource is also to be optimized. So digital resources जो digital market चल रहे हैं, crypto currencies चल रही हैं, digital transactions हो रहे हैं, उनको भी monetize किया जाना. And it also increase the capacity of portal to handle higher number of data processing. So digital portal पे बहुत ही ज़्यादा डेटा एक साथ कलेक्ट होते हैं जो GST में जाता है और उन पे टैक्स एक साथ चार्ज किए जाते हैं. That again makes a huge leap for GST. Now, direct monetization of fiscal deficit. Fiscal deficit यानी कि बचत घाटे का direct monetization न्यूज़ में रहा मित्रों. Why it was in news? Let us see that there is debate whether India should undertake direct monetization of deficit by Reserve Bank of India, giving hurt economic cost by the second wave of COVID-19. यानी कि फिजिकल डेफिसिट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लूप्स आ रहे हैं, उनको आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट टैकल किया जाना इनटू द मॉनेटरी पाइपलाइन. तो मॉनेटरी पाइपलाइन में डायरेक्ट जो भी फंड बच रहे हैं उनको डाल के उनके फंड्स को एक्सप्लॉइट किया जाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट. And fiscal deficit is significant as it is the difference between the total income of the government, that is total taxes, and non-debt capital receipts. Total taxes plus non-debt capital receipts is equal to total expenditure, that is under fiscal deficit, and it occurs when the government is expenditure more than that. Now, India has recorded a fiscal deficit of 9.3% of GDP in COVID lockdown period. COVID lockdown period में बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डिक्लाइन कर गई थी. दैट लीड्स टू राइज इन द फिजिकल डेफिसिट टू 9.3% का फिजिकल डेफिसिट हो गया. एंड दिस डेफिसिट हैज़ पुट एट 6.8% ऑफ द GDP. तो FRBM टारगेट में हमने देखा था मित्रों, FRBM के अंतर्गत 4.3% का
टारगेट रखा गया था फिजिकल डेफिसिट का, बट इट रेज टू 6.8, एंड दिस इज मेनली ड्यू टू राइज इन एक्सपेंडिचर टू मिटिगेट द फॉल आउट ऑफ पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक के फॉल आउट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए थे उसके चलते फिजिकल डेफिसिट में बढ़ोतरी हो गई थी। नाउ fiscal deficit is the total expenditure of the government, capital and revenue minus total income of the government, revenue receipts plus recovery of loans and other receipts. Remember this formula for your PT and mains. Total expenditure minus total income plus other assets, that is called as the fiscal deficit. So financing fiscal deficit is looked into the flow chart. तो मैंने आपके मेमोरी को आसान बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट डाला है मित्रों, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल डेफिसिट इंडिया की इकोनॉमी में काम कर रही है। सो इट प्रोवाइड्स दी डेट इनकरिंग वाया बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट। जो भी शेयर मार्केट से गवर्नमेंट बोरिंग ले रही है, पैसे को उठा रही है, उसको ये मोनेटाइज कर रहा है थ्रू ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स। इसे आप याद रखेंगे। सेकेंड, इट टेक्स द इंटरनल डेट दैट इज बोरिंग ओवर द इंडिया। भारत के द्वारा पूरे एक वर्ष के अंतराल में जो भी बोरिंग्स की गई हैं उसे फिजिकल डेफिसिट इंक्लूड करता है। देन थर्ड, इट टेक्स द एक्सटर्नल डेट बाय द कंट्री। इंडिया के द्वारा जो भी बाहरी कर लिए गए हैं, बाहर से जो भी ऋण लिया गया है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट बोरिंग फ्रॉम आउटसाइड। It also takes the expanding sources of revenue through measures such as raising taxes. So कहीं भी टैक्स को बढ़ाया गया है, such as GST or any tax, that is again a part of fiscal deficit. Further, the monetization of fiscal deficit, printing of money by central bank. तो मनी के सर्कुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिसिट, देन देयर इज अ फिएट करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन इट टेक्स द इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। फिजिकल डेफिसिट में इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन दिया जा रहा है, कहाँ से? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा, वेयर आरबीआई बाइज द बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट एंड टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ its various kind of expenditures and also prints the fresh money to infuse the liquidity. Further, direct monetization. RBI directly purchase government bonds in the primary market and printing the money that is needed for the circulation in the economy in order to cater the inflation. So inflation को manage करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। रिमेंबर दिस चार्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हाउ द डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इन इंडिया इज बीइंग डन। 1997 में फर्स्ट ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट किया गया था अंडर मनमोहन सिंह वाज देन फाइनेंस मिनिस्टर। सो एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, non-marketable short-term debt instrument issued by government of India, non-marketable treasury instrument को 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया and with fixed rate to replenish central government's cash balances. Further, agreement signed between RBI and government of India to phasing out the funding through ad hoc treasury bills and practice replaced with the ways, means and advances. तो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो ले रही थी गवर्नमेंट एंड WMA वेज मीन्स एंड एडवांसेस, इनको भी काउंटर करने के लिए 1997 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया मित्रों।
Now second part goes in 2006 when RBI participated in primary issuance of government securities. RBI डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने में शामिल हो गई कब? 2006. And after the issuance of subscriber of primary issuance of G6, this government securities issued by RBI in the year 2006, then 2006 to 18 complete prohibition on direct monetization. फिजिकल डेफिसिट का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे फिर से प्रोहिबिशन लगा दिया गया FRBM Act of 2003 that barred RBI from subscribing to the primary issuance of the government from 1st April 2006. So again FRBM Act makes the non-availability of fiscal deficit for the direct monetization. Now again in 2018 direct monetization allowed for certain goods. FRBM Act amended in 2017. Now fiscal responsibility budgetary management act का हम 2017 में संशोधन कर रहे हैं. किस लिए? To make the escape clause, by adding escape clause in the monetary measures to provide the deficit under the special circumstances. जब भी कोई विशेष परिस्थिति देश में पैदा होती है मित्रों, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे FRBM एक्ट का escape clause यूज़ करके उस फिजिकल डेफिसिट को डायरेक्ट मोनेटाइज किया जा सकता है. एंड इट issues the securities in case of government exceeds the fiscal deficit target on grounds such as National Security Act of War, national calamities such as pandemic of corona, such as drought, such as war situation. तो ऐसे विशेष परिस्थितियों में फिजिकल डेफिसिट को डायरेक्ट मोनेटाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग एस्केप क्लॉज. तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, व्हाट इज एस्केप क्लॉज एंड व्हेन इट कैन बी इन्वोक्ड बाय द आरबीआई. आप इसे याद रखेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्ट्री विद द ग्रुप ऑफ 7 nations in a landmark accord of backing a global minimum corporate tax rate of 15%. कॉर्पोरेट्स को पहले 35% टैक्स देने पड़ रहे थे, दैट वाज reduced to 30% level. Now in the various advanced economies and developed countries such as Switzerland, USA, Japan, Singapore, they have to pay only 15% of tax. Now G7 की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जब गए हुए थे तो एक वैश्विक मिनिमम टैक्स यानी कि न्यूनतम कर की दर को मानक बनाने की बात कही गई है, जिसमें कि 15% का टैक्स स्ट्रक्चर एक मानक के तौर पे लॉन्च किया गया है. सो हम इस न्यूज़ को थोड़ा डीप में देखते हैं. वी सी द न्यूज़ दैट व्हाट इज अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स. सो अ टैक्स इनकर्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल व्हेन दे आर investing into the manufacturing companies, when they are creating certain units of corporations, they are doing certain industrial works such as manufacturing of goods and services, service deliveries, तो उन पे एक मिनिमम कर लगाया जाएगा. दैट टैक्स शुड बी holistic global framework tax and that will be 15% of tax. So where suppose it is giving an example that a country is using a minimum tax rate of 11%, that means corporates should invest more and more into that country in order to have minimum tax to be paid to the government. गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स देने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, more reduction into poverty, then there is more policy penetration. Now country A would have top up to the tax and collect another rate of 4%. Now 11% का टैक्स वो कंट्री पे कॉर्पोरेट डायरेक्टली दे रहा था इन क्रिएटिंग सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब उसे केवल 4% का टैक्स और देना पड़ेगा in order to
मीट द डिजायर्ड टैक्स रेजिम। तो डिजायर्ड टैक्स कितना था, 15% का था, उसको मीट करने के लिए पहले 11 दिया, फिर 4% का दिया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री बीज रेट एंड द ग्लोबल मिनिमम रेट। सो नाउ दिस रेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिनिमम रेट इज 15%। तो 15% की वैश्विक दर रहेगी, जो कि यूनिफॉर्मली जो कंट्री अपने सोर्स डेस्टिनेशन से, जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आ रही है, नोएडा में अपना प्लांट सेटअप कर रही है, तो उसको केवल 15% का कर देना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय गवर्नमेंट विथ एडिंग नो फर्दर टैक्स ऑन इट। नाउ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया हैज इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट ऑफ द थ्रेशोल्ड। 2019 India has sharp cut in corporate taxes to 22% and add a new manufacturing unit of 15%, then broadly at par with average of 23%. India is having a holistic tax regime which will prevent the base erosion of taxes. टैक्सों के बेस का इरोजन जो हो रहा था, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, that is again to be maintained by introducing a global minimum tax. %15. Now India is already been proactive engaging with the foreign government in double taxation avoidance agreement. तो भारत का और भी मित्र राष्ट्रों के साथ DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन है। सो व्हाट इज DTAA? सपोज अ कंपनी कम्स फ्रॉम मॉरिशस रूट and India has a signatory of DTAA with Mauritius and India. So if the country pays a single tax at source, then it should be able to not pay the tax at India at the destination. So that is double tax avoidance agreement. Plug loopholes and common tax rate, it also further benefits to India. Tax evasion को घटाती है। Then tax loss incurred by India, भारत को कर में कितना घाटा हुआ है, that is $10.31 billion is tax loss by India, and which is equivalent to 0.41% of GDP. GDP का 0.41% घाटा इंडिया को हो रहा है, and that is less than the global average GDP of 0.53%. So भारत का 10 बिलियन का घाटा जो है टैक्स इवेजन के चलते हो रहा है मित्रों, जो कि कॉरपोरेट्स अपने टैक्स बेस पे नहीं कर रहे थे, एंड दैट इज अगेन $8 per member of a population is leading to again a tax evasion, then average GDP loss of 0.24%. तो भारत की GDP में यह 0.24% का लॉस क्रिएट कर रहा है, and $202 million of loss in the global taxation. ग्लोबल टैक्सेशन में 202 मिलियन का ये लॉस क्रिएट कर रहा है. फर्दर $10 billion of loss at the global tax abuse commitment at the multilateral corporations. तो मल्टीलैटरल कॉरपोरेशन में 10 बिलियन तक का लॉस ये क्रिएट कर रहा है, इससे बहुत घाटा हो रहा है. Now next news comes about the microfinance institutions. So microfinance institutions again make a huge part in the economy of India in terms of NBFCs, small financial bank, regional rural banks and the small credit availability banks. तो microfinance institution की बात कर रहे हैं, which RBI has proposed a regulatory regime for microfinance with the uniform set of guidelines for all lenders, service to poor and low income household to the enable borrowers to work in their way out of poverty and undertake income generation methods. तो जो स्मॉल सेक्टर्स हैं MSMEs की, तो उन्हें स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से उन्हें इजी लोन मिल जा रहा था. Now
माइक्रो फाइनेंस की इवोल्यूशन की बात करें तो 1983 में इन बांग्लादेश इंडिया हैज़ टेकन अ ग्रामीण बैंक इन 1983 under this model women borrowers and organized sector of self-help groups which take parts in the borrowing and lending activities for their small activities, यानी कि विलेज में कहीं सूताकारी हो रही है, कहीं छोटे मोटे महिला उद्योग हो रहे हैं सच एज लिज्जत पापड़ एंड मेकिंग ऑफ बैम्बू वर्क्स, दैन डेकोरेशन एंड आर्ट वर्क, तो उसके लिए महिलाओं के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कुछ लोन लिया गया था 1983 में, एंड विच मेक्स द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ईदर फॉर देयर इंडिविजुअल और ग्रुप रिक्वायरमेंट्स that caters to microfinance institution and it has witnessed phenomenal growth over past 2 decades। तो पिछले 2 दशकों में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफ़ी डेवलप हुए हैं एंड इट leads to the quantum of credit made available to the microfinance currency is serving around 102 million account for the poor population of India। Then Catered grew certain inadequacies and failure became culmination of the आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस। 2010 में 2010 में हमने क्या देखा था, आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस की क्राइसिस आ गई थी मित्रों, which again leads to various challenges। Now microfinance institution who agrees to engage into the production activities, they also take part into the development of wisdom and goods selling and purchase। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास विजडम रहती है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के लिए। नाउ अगेन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन practice due diligence of recovery and also help in the crisis of RBI। So there is again question of ethical and non-ethical practices and that was provided by Y.H. Malagam committee। Remember this committee, Y.H. Malagam committee, जिसने वर्किंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए काम किया। Now in several sectors of world microfinance institutions arose the non-governmental organizations and they also work by foreign donors of their lending operations। India involved in the public banks network and their unparalleled geographical use। So microfinance institutions, self-help group, NGOs and banks के साथ काम कर रहे हैं, which again makes the development of self-help group, NGOs and smaller banks to have easy credit availability। तो उनको आसान किस्तों पे लोन प्रदान किया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम is also kept under this since 1992 सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की इंटरलिंकिंग की जा रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, स्मॉल सेक्टर्स में काम करते हैं। नाउ इट इज metamorphosed in the world's largest microfinance movement, taking 100 lakh SHGs with the credit outstanding more than 1 lakh crore। 1 लाख करोड़ से अधिक की क्रेडिट यूज कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन द माइक्रो फाइनेंस experiment has been described by NABARD as relationship banking rather than a parallel banking। So NABARD ने माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को बहुत ही सपोर्ट किया है and it makes commitment to make microfinance institution as relationship banking rather a parallel banking। Remember this point for your prelims as well as mains point of view। Now core sectors of microfinance। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जब कोर सेक्टर की हम बात करते हैं तो MFI इंक्लूड करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स,
एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स से याद रखेंगे। देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉरपोरेशन बैंक ऑल्सो, कॉरपोरेट बैंक भी इसमें आते हैं। एंड एनबीएफसीज भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। Then microfinance institution recognized as NBFC's MFI. NBFC's microfinance institution भी इसका part है। Now such institutions which are lending small amount of loans, ऋण के छोटे भाग को किसी भी संस्थान को ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराते हैं, that is a microfinance institution. Then to borrow belonging to low income groups, न्यूनतम कमाई की दर वाले ग्रुप्स को, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन रीजनल रूरल बैंक्स, देन सच स्मॉल एनजीओज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो लोन दे रहे हैं, दैट आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। दे ऑल्सो प्रोवाइड लोन विदाउट एनी कोलैटरल, यानी बिना किसी गिरवी रकम के वो स्मॉल ऋण देते हैं। Then again they provide flexible repayment schedule, यानी कि repayment is not bounded under any act of government of India. So that is again a benefit of microfinance institutions. Remember this chart for your prelims and mains. Then objectives of microfinance goes for promoting financial inclusion and increment in human resource productivity, poverty collection and improvement in the standard of living. It also provides women employment and empowerment to the women. So gender parity बढ़ाता है, महिलाओं को सशक्तिकरण भी करता है, and provides benefits to the various women, and it also leads to asset creation. So microfinance institutions, multiple targets. Further, gross loan portfolio outstanding of microfinance institutions, तो उनके जब हम लोन्स की बात करते हैं मित्रों, तो microfinance institution take part in 37% of loan in 2019 and 32% of loan by microfinance institutions in 2020. So they are taking huge part in the loan dispersal. We see that existing regulatory frameworks of MFI and proposed changes in the regulatory framework. Definition of microfinance, 1,25,000 से 2 लाख for urban areas, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,25,000 तक का लोन देते हैं, एंड इन अर्बन एरियाज 2 लाख तक का लोन देने में सक्षम है, दैट इज माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। लिमिट्स क्या है, दैट इज लिमिट टू द बॉरोवर डज नॉट एक्सीड 1,25,000 एक्सक्लूडिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ करके 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैन नेचर ऑफ लोन इज कोलैटरल फ्री लोन विदाउट एनी प्रीपेमेंट पेनाल्टी। सो ये बिना किसी संपार्श्विक के दिया गया यह लोन है। दैन लोन अमाउंट लिमिट्स टू 1,25,000, 75,000 फॉर फर्स्ट साइकिल एंड एक्सक्लूजन ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। देन कम से कम 24 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी फॉर दिस लोन्स ऑफ अबोव 30,000 प्लस। 30,000 से ऊपर का कोई लोन लेता है मित्रों, 2 साल की अवधि रहेगी। Then not more than 2 NBFC MFI can lend the same borrower। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक MFI लोन नहीं देंगे। Remember this fact. Then minimum 50% of loans to be given to the income generation activity। जो आय प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं such as production activities, creation activities and such kind of productivity sectors, तो उसमें ये 50% का लोन दिया जाएगा। सो इसके लिए क्या सुझाव है, ऑल लिमिट्स शुड बी विथड्रॉन फ्रॉम दिस सेक्टर। देन पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट इज वीकली पेमेंट, फोर्टनाइटली पेमेंट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट एज पर देयर चॉइस। किसी को अगर ऋण चुकाना है तो वो
फोर्टनाइटली, वीकली और मंथली बार में कर सकता है। देन प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन्स एंड 10% ऑफ माइक्रो फाइनेंस विथ लोन पोर्टफोलियो 100 crore for above and 12% for other. Average base of the 5 largest commercial banks by asset multiplied by 2.75. So no ceiling prescribed for the interest rate of non-banking financial companies. कोई भी इसके लिए सीलिंग नहीं होनी चाहिए. That means microfinance institution can give loan and collateral without such problem. Board of each NBFC MFI shall adopt at interest rate model taking into account relevant factors such as cost of fund, margin and risk premium, and determine the rate of interest to be charged for loans and advances. इसे हम याद रखेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं. फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत. So Amrut mission has been form of urban smart cities and Atal mission for rejuvenation, urban transformation and Pradhan Mantri Awas Yojana urban. So Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY urban plus smart cities plus Amrut. These are part of development of urban housing and infrastructure. शहरी विकास के लिए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अमृत योजना काम कर रही है. अर्बनाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज टू द मॉडर्न अर्बन कम्युनिटीज. अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेसेस इंटायर स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस यूज्ड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन द अर्बन एरियाज. नाउ urban areas are being systematically developed by Government of India by providing bare minimum facilities as well as the advanced facilities in terms of water, electricity, roads and Wi-Fi and advanced center of excellences in those cities, plus advanced hospitals and electric vehicles. These are all parts of the urban area development program, then which also collapsed under the urban areas complete comprehensive integrated approach. So India's first approach in urban sector development goes for the development of effective waste collection and system that reaches more residents, showing cities how to incorporate the informal work sectors of the economy. Informal sectors of economy जो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनको फॉर्मलाइज करने के लिए अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया. दिस अप्रोच लीड्स टू मेंटेनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट मीन्स इंक्रीज फ्रॉम 282 million to 590 million इन 20 years. दैट इज 2050 तक जो भी पॉपुलेशन डेवलप करेगी. That means maintaining the population systematically in terms of health, hygiene, education, knowledge, skill training, better facilities and all the health goods facilities for life development and sustainabilities with environmental guidelines is provided under this mission. Further, it generates the employment opportunity for the people who are going to take the part in the formal economic system. Also, it provides the opportunities in cities in terms of development sectors and public health, education, transport, sports and recreation. Remember it for your prelims as well as mains point of view. It also provides the measures for economic growth. तो अर्बन सेक्टर का जब डेवलपमेंट होगा तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSMEs ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स में डेवलप होती हैं मित्रों. And those MSME leads to faster growth of the economy of India, and that caters to contribute 70% of India's GDP by 2030. तो भारत की GDP में ये
70% तक का योगदान देगी। फर्दर इट ऑल्सो fulfills the motto of sustainable development under UN SDG. Urban transformation leads to accelerated change towards the local global sustainability and resilience, which enshrined in the 2030 UN Sustainable Development Goals. UN SDG के गोल्स को 2030 तक फुलफिल करने का इंडिया की प्रॉमिस को ये कैटर करता है बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड institutional parameter by providing 74th Amendment Act in the Constitution of India by making urban local bodies functionally and financially independent, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर निगम नगर निकाय की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था मित्रों, जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं डायरेक्टली नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ कर सकती हैं। Then it makes the public monopoly by organizing the higher leakages, lack of preventive maintenance and countering the technical flaws in the system of urban local government, यानी कि शहरी गवर्नमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनके लूप होल्स को, उन प्रॉब्लम्स को कैटर कर रही हैं। lack autonomy and lead to the failure of the public sector providing adequate services. Further, it provides the progress measures. So PM Awas Yojana urban address the urban housing shortage and help the economically weaker sections. So PMAY handles the economically weaker sections, leads to development of middle income group. Further helps the middle income group in their development and ensures the पक्का हाउस बाई 2022। सभी शहरी क्षेत्रों में कैसा आवास, पक्का आवास, यानी कि आयरन एंड ब्रिक हाउसेस इन दी अर्बन सेक्टर। सभी शहरों में अर्बन सेक्टर्स में पक्का आवास। प्रोग्रेस अभी तक 1.2 crore houses sanctioned, more than 50 lakh houses completed, 50 लाख से अधिक आवास तैयार हो चुके हैं अंडर दिस मिशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज एंड फॉर द फर्स्ट टाइम interest subsidy on the home loans given to MIG having the annual income up to 18 lakh under credit linked subsidy scheme. Remember this, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत उन्हें 18 लाख तक की MIG दी गई है। ओके फ्रेंड्स, नाउ बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हांसमेंट, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ PM आवास योजना। All weather housing unit with water, kitchen, electricity, women empowerment, better quality of life and urban poor, security of tenure for the better house and adequate physical and social infrastructure, ये PM आवास योजना के फीचर्स हैं। एंड टारगेटेड बेनिफिशरीज फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें टारगेटेड बेनिफिशरी में रखा गया है, जिन्हें PM आवास योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी जाएंगी? एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, लेबर जॉब्स, देन अर्बन पुअर स्ट्रीट वेंडर्स, मार्केट ट्रेड एसोसिएशंस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। फर्दर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट विजिटर्स, जो लंबे अवधि के लिए किसी भी शहर को विजिट करते हैं, उनको भी आवास सुविधा दी जाएगी। फर्दर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक कर्मचारियों को भी ये सुविधा है। नाउ 105 लाख हाउस होल्ड वाटर टैप, यानी कि 105 लाख घरों में पानी के नल का कनेक्शन, 78 लाख सीवर कनेक्शन एंड 88 lakh street lights have been replaced with the energy efficient LEDs. As per the Energy Resource Institute टेरी के द्वारा
it has reduced 84.6 lakh ton of carbon footprint from Indian cities. Now remember this fact for your prelims as well as mains point of view. Now the features of Amrut mission goes for water supply, sewerage creation and basic services of household and amenities. So first is the water supply, यानी कि हर घर नल का जल, clean drinking water and pre-pedestrian, non-motorized and public transport facilities as well as the parking stages for the motor using people. Creation and upgradation of green spaces, यानी कि स्वच्छ हरित पार्क बनाना, हरित क्षेत्रों को उन शहरों के बीच में लाया जाना. Creating storm water drains to reduce the flooding, कहीं भी अगर बाढ़ आ रही है तो उस क्षेत्र को बाढ़ से और पानी के लॉकेज से, लॉक जैम से सुरक्षित करना. देन सीवरेज फैसिलिटीज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, सेप्टेज मैनेजमेंट और सीवरेज फैसिलिटी भी अमृत मिशन का पार्ट है, आप याद रखिए. एंड ऑल सिटीज हैविंग पॉपुलेशन अबव 1 lakh आर कवर्ड अंडर दिस मिशन. सो सिटीज सच एज कानपुर, बोध गया, पटना and Bhagalpur, which are having more than 1 lakh population, are part of this mission. Then SCM mission curtails the cities with better infrastructure, clean and sustainable environment and smart solution like smart grid, smart water, internet and internet of things, plus 6 fundamental principle of infographics. तो इन्फोजेनिक और इन्फोग्राफिक मेथड के द्वारा हम शहर के चैलेंजेस को कैटर कर रहे हैं. नाउ 70 स्मार्ट सिटीज हैव डेवलप्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड देयर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कहाँ पे? 70 स्मार्ट सिटीज में बनाए गए हैं अंडर अमृत मिशन. रिमेंबर दिस फैक्ट. Towards vibrant public spaces and progressive paths of Swachh Bharat mission. Now, as we discuss the statistical part of this Amrut mission, let us have a look in this data which provide that 25% of urban planning, green cover and biodiversity under Amrut mission. And for climate smart cities, we have waste management part 15%, water management 15%, mobility and air quality again 20% and 25% of energy and green buildings. Now freedom is provided under the flexible choice for urban local bodies and smart cities to create education, health and services sector in the cities. Further, it provides incentive for the match as per the need of the cities. Then last is the transparency in the creation of cities model. तो ये 3 फैक्टर आप बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम एंड इंसेंटिव फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ टूरिज्म इन इंडिया. तो भारत में पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं मित्रों. दैट वाज इन न्यूज. सो Ministry of Tourism has created Indian Institute of Tourism and Travel Management in order to provide various programs for development of tourism in various cities as well as various tourist destination. भारत में बहुत ही बढ़िया पर्यटन के क्षेत्र हैं मित्रों, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्राचीन काल से आते रहे हैं. तो ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए होलिस्टिक टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है, जिसमें कि Indian Institute of Tourism and Travel Management is to be established, and National Council of Hotel Management and Catering Technology and Institute of Hotel Management and Indian Culinary Institute. Further, Indian Tourism Development Corporation under the Ministry of Tourism is helping to promote the tourism at various parts of the country, also facilitating the e-visa facility. इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा फैसिलिटी भी दी जा रही है. प्लस नेशनल्स ऑफ दी 169 कंट्रीज़ जो कि ट्रैवलर्स फ्रिक्वेंट इंडिया विजिट करते हैं 169 कंट्रीज़ के, उन्हें
5 सब कैटेगरीज में ई वीज़ाज दिए जा रहे हैं। दीज 5 सब कैटेगरीज, रिमेंबर ऑन योर पॉइंट, दैट इज ई टूरिज्म वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा, medical treatment visa and conference visa. These 5 kind of visas are provided by the government of India at the travelers who are frequently traveling to India a lot. Now e-medical visa and for medical attendant visa we are having the Ministry of Tourism direct permission, for which we have a triple entry permission. Further, tourism infrastructure in the historical places and heritage site with a theme based tourism is also provided under this tourism methods. Now हम देखते हैं कि tourism कैसे कैसे बढ़ाया जा रहा है. So earlier the tourism center was having 8% of total employment in 2020. लॉकडाउन के बावजूद भी मित्रों 8% तक का रोजगार पर्यटन विभाग के द्वारा और पर्यटन क्षेत्रों में भारत के लोगों को मिल रहा था. दैट मीन्स इट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर. देन इट प्रोवाइड वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल shows that India ranked 10th among 185 nations in sector of travel and tourism, which counters the huge potential of GDP in 2019. तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का टोटल 10 हिस्सा ट्रैवल एंड टूरिज्म से आ रहा था. देन इट हैज 6.8% ऑफ टोटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन इन 2019. देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म वाज 30.6 बिलियन इन 2019, increased from 2018. So we have huge forex of 634 billion US dollar, and which is quite high with comparison of tourism sector. Now share in the international tourism arrival in 1.23% in 2019. 1.23% अराइवल थे डिस्पाइट कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन. विश्व के बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया को ही प्रीफर करते हैं एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ इज इकोलॉजिकल बैलेंसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वेल एज द scenic view and exotic places in India that leads to attraction of tourism. Then top source of market for foreign tourist arrival in Bangladesh, US, UK, Australia, Canada, China, Sri Lanka, Malaysia, Germany and Russia. आप इस फैक्ट को याद रखें in writing your mains answer. So, Prasad has been created by pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation rise. Prasad scheme भारत सरकार के द्वारा लाई गई for enhancing the tourism at the spiritual places and historical places. तो historical places में tourism को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद लाया गया. And under this scheme, 51 sites has been identified, in which 28 states for the development of these 51 sites. 51 टूरिस्ट सेंटर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया अंडर दिस प्रसाद स्कीम बाय उड़ान 1 एंड उड़ान 2 स्कीम. उड़ान 1, 2 एंड 3 तो डायरेक्ट इन टूरिस्ट प्लेसों पे एयरपोर्ट को बनाया जाना एंड मेकिंग द ट्रैवल फैसिलिटी ईजियर बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स फॉर the roadways also. So Ministry of Tourism identified these iconic sites. तो वैसे sites जो कि iconic हैं travel and tourism purposes के लिए उन्हें identify किया गया and that leads for the development under the iconic tourism sites. तो 17 iconic tourist site को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड किया है. Then next is development of project Incredible India 2.0 project provided for the tourism ministry under taking a shift from generic promotion of the tourist sectors by government of India under this project, and it also provides the specific promotional plans and content creation. And Udan RCS3 regional connectivity, third Udan provides connectivity to 46 tourism routes. रिमेंबर फ्रेंड्स, उड़ान 3 के अंतर्गत 46
पर्यटन क्षेत्रों को डायरेक्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट कैन गो टू दैट प्लेसेस डायरेक्टली बाय टेकिंग हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स. नाउ Center announces free visa for the 5 lakh tourist and loan guarantee scheme to support recognized tour operations. 5 लाख पर्यटनार्थियों को, यात्रियों को डायरेक्ट वीज़ा प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू ई वीज़ा मेथड टू प्रोवाइड देम अ बिजनेस फैसिलिटी ऑल्सो ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के काल में जो भी परेशानियाँ आई थी उनको मिटिगेट करने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल लाया गया है. नाउ हैव अ लुक एट दिस मॉडल. दैट मीन्स environmental sustainability. Tourism will be there, but it will also address the environmental protection measures, making optimal use of environmental resources and development and maintaining essential ecological process, helping conserve natural heritage and biodiversity. Then socio-cultural sustainability, socio-cultural authenticity to host communities, conserve their built and having cultural heritage and traditional values to contribute to intercultural understanding and the tolerance through the pilgrimage sites. Now third point is economic sustainability. So remember this 3 point for tourism development, that is ensuring viable long-term economic operation, providing socio-economic development at the various sectors of tourism by promoting distributed among stable employment and income earning opportunity and social services to host the communities that are inside those spaces. Yani ki some areas of forest which are having a wildlife sanctuary, some national park, and tourists are visiting that place. So their ethnic identity and their culture is also maintained under this new tourist scheme and Prasad scheme. So what is the steps taken for sustainable tourism? There is Incredible India promotion under the ban to attract major cities and heritage attractions. Then India adopted GSTC criteria, that is Global Sustainable Tourism Council criteria of 2010 for sustainable tourism. Global Sustainable Tourism criteria क्या है मित्रों? वैसे क्षेत्र जहाँ पे there is a green environment, forest areas and biodiversity zone, hot spot, then there should be limited field of tourism and the tourists should not use any kind of plastic uses, any kind of drugs or tobacco uses is prohibited. So that is sustainable tourism criteria for responsible and sustainable practice of tourism. Further, it provides guidelines for classification of hotels under various categories for eco-friendly measures like sewerage treatment plant, rainwater harvesting system and waste management system. So sustainable tourism के लिए sewerage treatment plant, rainwater harvesting and waste management system, these 3 things will must be adopted. Then architecture of hotel building in hilly areas and ecologically fragile areas should be sustainable and energy efficient, and under Ministry of Tourism to sign the agreement commitment towards the safe and honorable tourism and sustainable tourism. So remember this fact for your prelims as well as mains point of view. Now to mainstream the sustainable tourism development and improve the competitiveness, we have strategic pillars identified. सरकार ने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर्टेन स्ट्रेटजिक पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है मित्रों. तो इन्हें हम देखते हैं. दैट इज सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म बेस्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया. तो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा वैसे प्लेसों को, वैसी जगहों को जहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म जाते हैं, यानी कि बोध गया जैसे हो गया है ना, नालंदा हो गया, हम्पी हो गया, such places where there is Agra, Taj Mahal, high frequency of tourist to that places. तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? Digitization and broadening of certification.
तो वहाँ की क्लीनलीनेस, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को देखते हुए उस प्लेस का सर्टिफिकेशन किया जाना। Information, education and communication campaign for the development of that place by creating awareness, understanding and acceptance of sustainable tourism. Then capacity building in field in functionaries and conservation agencies. तो जो भी वैसे सस्टेनेबल टूरिस्ट एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज के कंजर्वेशन एजेंसीज हैं, उनको उनकी कैपेसिटीज को बिल्ड करना एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग इन दोज एरिया, फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टू दोज कम्युनिटीज अंडर दोज टूरिस्ट एरियाज. नाउ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू फॉस्टर कॉम्पिटिटिवनेस. स्टेट्स की रैंकिंग भी की जाएगी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए. मार्केटिंग एंड प्रमोशन बाय क्रिएटिंग सब ब्रांड अराउंड एडवेंचर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म. इको टूरिज्म यानी कि इकोलॉजिकल टूरिज्म प्लस द बिजनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग की जा रही है. देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन फ्रेम्ड फॉर 15 लैंड बेस्ड, 7 एयर बेस्ड एंड 7 वाटर बेस्ड एक्टिविटीज. Remember this fact. And each state will be identified an adventure destination by offering land, air and water based activities. सभी वैसे राज्य जहाँ पे एयर, वाटर और लैंड एरियाज ऑफ टूरिज्म सेक्टर्स हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो रिमेंबर दिस फैक्ट. व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस फॉर टूरिज्म. तो टूरिज्म एरिया की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को हम देखते हैं. दैट हाउ टूरिज्म एरिया इज वर्किंग इन प्रोटेक्शन ऑफ रेजिलिएंट टू क्लाइमेट कंडीशंस, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, कोस्टल एंड हिमालयन एरियाज, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज. तो उनका ये इंडियन टूरिज्म सेक्टर का स्ट्रेंथ है. दैट इज इंडिया इज हैविंग सो मच ऑफ टूरिस्ट एरियाज and natural reserves, wildlife sanctuaries and ecotourism. Opportunities क्या है मित्रों? That India is having a sector of holistic tourism and job creation and new business opportunities, entrepreneurship and job creation, plus prevents the migration of rural people to urban areas in search of job, and also provides means for sustainable development and agricultural tourism. Also there is weakness of tourism, that is national level poor profiling of rural product offerings. ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है. जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. दैट इज़ अ वीकनेस. देन लैक ऑफ टूरिज्म अवेयरनेस एंड स्किल्स इन द रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में स्किल्स नहीं हैं टूरिस्ट के लिए. पूरा रिसोर्स एलोकेशन फॉर द टूरिस्ट एरियाज एंड कैपेसिटी गैप ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल टूरिज्म. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्किल ट्रेनिंग नहीं दी गई है. नाउ व्हाट इज थ्रेट्स टू द टूरिज्म. लैक ऑफ रिलेबल डेटा एंड स्टैटिक्स. टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिलेबल डेटा अभी तक भारत सरकार के पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ रूरल टूरिज्म. देन इट चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लाइक पॉल्यूशन एंड वाइल्ड लाइफ extension. Then social and cultural influences like traditional products and the rural products are not being marketed by government of India. That is again a challenge for the government for sustainable tourism. Now what are the benchmarking of state policies for the tourism? So foster the tourism, making the states and rural tourism more prone towards the sustainable development targets, and climate friendly tourism should be promoted. Then areas irrespective of strength and priority should be taken for the tourist purposes. Then work with the states and implement successfully model for private sector and community partnership. Then digital technology platform in rural tourism, which also provides infrastructure in rural areas, capacity building for various segments,
and providing financial, technical and networking support. Then developing cluster for rural tourism, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर का निर्माण किया जाना. एंड हाउ इट इज बीइंग डन? आइडेंटिफाइंग द क्लस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, development plans for identifying tourism cluster and covering the components like physical infrastructure, digital infrastructure and social infrastructure. Remember this for your prelims as well as main point of view. So medical tourism is also there. Many people visit certain areas of Kerala and Himachal Pradesh and Uttarakhand is having the medical tourism also for naturopathy and Ayurveda and yoga system. So it increases the frequency of global tourists to India with destination region to purpose of maintaining, improving and restoring health through medical intervention, and it is classified into the medical treatment. That is two areas. First is medical treatment and second is wellness and rejuvenation. So medical treatment में medical surgery के लिए, treatment for curative purposes, organ transplant, for this sector people traveling in India, and wellness and rejuvenation offered focused on rejuvenation and aesthetic regions such as cosmetic surgery, stress relief, spas, etc. Then alternative cures, access to Ayush mission, Ayurveda, yoga, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसके भी बेटर फैसिलिटीज़ के लिए इंडिया में लोग विजिट करते हैं. दैन इट ऑल्सो पेज फॉर पेशेंट हेल्थ स्ट्रक्चर एंड वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ travel in the nation. Now with this I believe you are getting the current affair holistic knowledge. With this approach we will also discuss the question in the next session of this current affair. So thank you for your watching. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.